अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एट होम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है प्लांट सिस्टम्स। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक किया करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच रूट सिस्टम कैन गेट वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज? द आंसर इज बी, टैप रूट्स। नंबर 2, which of the following is not an organ of plant? The answer is A, stomata. Number 3, vascular bundles are present in every part of the plant. They are made of. The answer is C, xylem and phloem. Number 4, Alia dropped a spoon of sugar in a glass of water and forgot about it. After a few hours, when she tasted the water, it was sweet. Due to, the answer is B, movement of sugar molecules from area of high concentration to low concentration. Number 5, if water available to plants become less, then stomata are closed even at daytime. This protects plants from, the answer is C, wilting. Number 6, a goat ate all the leaves of a small shrub. In few days, the plant dried although it was watered regularly. The main reason could be that without leaves, plant cannot. The answer is A, make food. Number 7, if the concentration of carbon dioxide increases in the air during daytime, the process of, the answer is C, photosynthesis will increase. Number 8, Hassan was sitting under a tree shade on a hot day. When he looked up, he noticed that all leaves of the tree were arranged at different angles, so that the answer is A, all the leaves get sunlight. Number 9, if you stay under trees at night, you can feel dizziness due to, the answer is B, low level of oxygen and high level of carbon dioxide. Number 10, which of the following is the correct word equation for respiration? The answer is B, carbon dioxide plus water plus sunlight, glucose plus oxygen. Next we have true and false, and we have to correct the statement if it is false. Number 1, exchange of gases in plants takes place through tiny holes called stomata located on the margins of leaves. This statement is true. Number 2, the rate of photosynthesis is slow in variegated leaves because there is maximum amount of chlorophyll in them. इसमें मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखेंगे और बाकी की स्टेटमेंट उसी तरह से लिखेंगे. Number 3, respiration can only take place in animal cells because they need energy. इसमें only को हम सर्कल कर लेंगे या काट देंगे और इसकी जगह आएगा in animal and plant cell और बाकी सारी लाइन उसी तरह से लिखेंगे. Number 4, the job of the root hairs is to protect the roots from damage. इसमें लिखेंगे the job of the root hair is to absorb water and minerals from the soil. The job of the root तक उसी तरह से लिखेंगे और बाकी की सारी लाइन जो है उसकी जगह हम चेंज करके लिखेंगे. Xylem is dead tissue while phloem is living tissue. This statement is true. Short question number 1. What are the 3 functions of roots? Answer. Number 1, roots absorb water and minerals from the soil. Number 2, roots store food and minerals. Number 3, roots transport water and minerals to stem. Question number 2. Plant stems are of many types. Name any 3 types of stem with examples. Answer. Number 1, herbaceous stems. Plants with green and flexible stems are called herbaceous stems. For example, daisies, crops and grass. Number 2, woody stems. Plants with hard and strong stems are called woody stems.
For example, trees, shrubs, and most vines. Number 3. Underground stems. These stems are found underground. For example, ginger and potatoes. Question number 3. Why does water move upwards through xylem in daytime? Answer. Water evaporates from the leaves in daytime and creates the shortage of water. So as the water evaporates from leaves, more water is pulled up through xylem to replace it. Question number 4. How stomata help in the process of photosynthesis? Answer. Stomata helps in the process of photosynthesis. Number 1. Carbon dioxide enters the leaf through stomata. Number 2. Extra oxygen moves out through stomata. Question number 5. What is the importance of chlorophyll for plants? Answer. It enables a plant to make its own food by the process of photosynthesis. Number 2. The green color of plants is due to chlorophyll. Now we will note down the answers of long questions. Question number 1. Compare the properties of xylem and phloem. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पेज नंबर 9 पर. सबसे पहले जाइलम की हेडिंग देंगे और उसका पैराग्राफ लिखेंगे और उसके बाद फ्लोएम का हेडिंग और उसकी 5 लाइंस इसमें इंक्लूडेड हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स? एटमॉस्फेयर. आंसर. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. ये प्लांट्स की हेडिंग के साथ लिखेंगे. इसके बाद ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में लिखेंगे ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स गेट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस. इसके बाद एटमॉस्फेयर. द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 3. Photosynthesis and respiration are two different processes. Differentiate between them. Photosynthesis में हम लिखेंगे it occurs in sunlight, it only occurs in plants, energy is stored, carbon dioxide is used. And respiration में हम लिखेंगे it occurs in all the time, it occurs in all living things, energy is released, oxygen is used. At page number 17, we have constructed response questions. Question number 1. The rate of photosynthesis in aquatic plants at different temperatures was investigated. The findings are shown in the following graph. एक ग्राफ हमारे पास शो किया गया है जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है उसको बताया गया है और उसमें से क्वेश्चंस हम सॉर्ट आउट करेंगे. How does the temperature from 15 degrees centigrade to 35 degrees centigrade affects the process? The answer is the rate of photosynthesis increases with increase in the temperature from 15 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. B. At what temperature is the rate of photosynthesis the highest? Answer. The rate of photosynthesis is highest at 38 degrees centigrade. C. When the temperature is increased beyond 40 degrees centigrade, what will happen? Answer. If the temperature is increased beyond 40 degrees centigrade, the rate of photosynthesis decreased. Question number 2. The table shows the transpiration rate of a plant in different conditions. हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें प्लांट्स के ट्रांसपायरेशन के डिफरेंट रेट्स बताए हैं. मॉइस्ट एयर में अलग है, डार्कनेस में कैसा है, ब्राइट लाइट में, स्टिल एयर में, सब डिफरेंट रेट्स बताए गए हैं. अब इसमें से हम क्वेश्चंस देखते हैं. सबसे पहले है विच कंडीशन कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? द आंसर इज मूविंग एयर कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, क्योंकि मूविंग एयर में देखें सबसे ज़्यादा है 21. नेक्स्ट, हाउ मच ग्रेटर इज द ट्रांसपायरेशन रेट इन मॉइस्ट सॉइल देन इन ड्राई सॉइल? मॉइस्ट सॉइल में जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो 18 है और ड्राई सॉइल में 2 है. हम 18 में से 2 माइनस कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 16 mm पर मिनट. तो आंसर लिखेंगे 16 mm पर मिनट. द ट्रांसपायरेशन रेट इज ग्रेटर इन मॉइस्ट सॉइल देन ड्राई सॉइल. C. What sort of conditions can increase the rate of transpiration? Answer.
Bright light, moving air, dry air, and moist soil can increase the rate of transpiration. D. How does transpiration help in the water cycle? Answer. Transpiration is an important factor in the water cycle as it is one of the major sources of water into atmosphere. Students, I hope you have noted down the exercise of unit number 1, plant systems. If you have any question, you can ask in comment section, and please do not forget to subscribe and share this channel as much as you can. Take care. Allah Hafiz.